Welcome to all the participants in the last session of this day. The topic of this meeting is Know Your Classroom Management Style. The presenter is Mr. Shailendra Kumar Tiwari. So I would like to call Mr. Shailendra Kumar Tiwari sir to hold this meeting and start. Mr. Shailendra Kumar Tiwari. Over to Mr. Shailendra Kumar Tiwari. Yes, please come on to the podium. Welcome to all the viewers, those who have joined the class already, and all the respected teachers who are supposed to join. It is my humble request to all of them to join the class and just try to concentrate the things, the techniques related to classroom management. Respected teachers, taking class is an usual phenomena, and it is a part of our daily life. It is a part of our daily job. But sometimes we forget, or just you can say that we get ourselves confused that what is the best way, what should be the best way, the most suitable way of presentation. We will just go through one by one. Though it is a very common topic, yet we will just find something new, quite new, that may assist us in the presentation, in the beautifying the entire classroom scenario. बंधुवर, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा हो, अपनी बातें डिलीवर करने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाए और किन तकनीकों के माध्यम से हमारी डिलीवरी मजबूत हो,
इंटरेस्टिंग हो, एंजॉयबल हो, ग्रास्पेबल हो, इस पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। एंड आई होप दैट दिस कॉमन टॉपिक will enable you to feed the best before entering into the class for delivery. Every one of us sitting here or joined to the class are well known about the fact that a healthy class scenario can only be beneficial to make the pupil known about the facts and at the same time satisfy our inner quest of delivering knowledge. Because it is a giving and taking management. We listen to the problem very firstly of the peers of the ward sitting in the class, and according to their individual problem we try to provide the specific remedy. ऐसा नहीं है कि क्लास में हम जाते हैं और सिर्फ अपनी बातें कह करके चले आते हैं। ये वन साइडेड अप्रोच लेकर के हम लोग क्लास जाते नहीं, और ये फ्रूटफुल भी नहीं है, ये फलदायी भी नहीं, because teaching is a bilateral process. शिक्षण हमेशा से एक द्विपक्षीय बातों को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। Dear sir, in this very class and the different episodes through which we will pass, I will bring forth those hidden facts that may be quite beneficial at the time of the final delivery, when we just go into the class and try to saturate the quest of knowledge of the student. Here is the definition that is already displayed on the screen. Classroom management is a way or is ways of organizing the resources, pupils and helpers. The three-polar system is there. The first is the organizer, means you, the management, and all the fellow who are engaged in proper transformation of the knowledge in the class. The second one is the different resources, which remains to be scattered. That remains to be scattered, but it is you who assemble them all and produce in the form of the finest one. Otherwise, resources will be of no use. It will just go in vain. Only if you don't know how to assemble it. The people talk that this very school has a great resource, a great, huge building, many technical staffs, wizard teachers. We talk about this. Very good sanitation facility, very good drinking water facility, electricity, audio-visual system. But so what if we don't want to utilize them? So resource allocation is must. It is the first and primary requirement for any institution. But at the same time, if it lacks the good organizer, if it lacks the good captain, resources will not be useful. It will just go in vain. It will be wasteful in some way. I think that it is a common understanding, and we all understand it well. The third one is helpers.
if the classroom has the dirt, if the environment is not very healthy, if the assisting bodies and assisting mechanism is not helpful, again, a good delivery will remain a daydream. So combining these three, or a good organizer, sufficient resources, and pupils, helpers, all will make an ideal scenario of grasping more and more. The second one is classroom system. A group of students meeting together, following the guidance of a teacher, then a real knowledge delivery will be possible. If there is nuisance prevailing all around, if the scenario is noisy, if the situation of the school is just beside the crowded place, all sort of unwanted noise are pouring in, good delivery will not be possible. So good, healthy, ideal class scenario is a must. Then again, we come on to the management system. Management comprises planning, organizing, leading, and controlling of human and other resources to achieve desired goals effectively and efficiently. Dear sir, it does not need any clarification that a good management system, if we want to set up, we have to abide by good strategy. Planning is a must. From where we have to go, where we have to stay, where we have to accomplish. All these things matters. So a good planning is the other name of success. For every minute step, either in practical life or in educational life or in political or in social, a good planning is the basic requirement for success. Generally, we ignore them. Some of them feel that whenever we will approach the spot, we will start operation. No, we should avoid it. A good planning is the primary requirement. It is the natural requirement, we can say. The second one is organizing, as we talked about. If a ship has not a good captain, it is certain that at the time of the disaster, no one will come for the final rescue. The ship has to sink. So good organizing capacity, an individual having a very good organizing capacity must lead. A real leader always leads from the front. He does not remain outside. It does not remain beside. It does not remain backbencher. He should have the caliber to lead the entire folk from the front. And we, the teachers, are also the captain of the class. We are the leader of the class. In the first session, I told you that a teacher is the real monarch of the class. No one can challenge him so far the content delivery is concerned. If the authority is there, he can observe me, but his observation depends completely, will be successful only if
the teacher who is present in the class is honest and is very honestly delivering the things. Otherwise, he will be the spectator from the outside. He cannot calculate the real things. What's going on exactly in the class? It is only we who determine, who affixes, who provides the guarantee of the final outcome. Nobody else. So, organizing the things with a good planning criteria is a must. Then the leading aspect is there. A good organizer can lead also very well. And ultimate aim of the entire thing is that controlling of human and other resources to achieve desired goals. Achievement of goals with effectiveness, with all efficiency. As we talked earlier, the teacher is the only person who is well known about the real problem of the world, and he is the only person, एक शिक्षक ही वह सही आदमी है, वह सही व्यक्तित्व है जो अपने विद्यार्थियों की परेशानियों और समस्याओं को सही तरीके से समझ सकता है और उसके आवश्यकता के अनुरूप रिमेडी बता सकता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो मैनेजमेंट के हिस्से तो हो सकते हैं, लेकिन वार्ड के लिए रियल कंट्रीब्यूटर नहीं हो सकते। ये काम तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरा असिस्ट करेगा, रास्ता बताएगा, लेकिन रास्ते तक उंगली पकड़ करके पहुंचाना ये शिक्षक का ही कार्य है। और अगर उसमें दायित्व निर्वहन की क्षमता है, अगर उसमें दायित्व निर्माण की क्षमता है, अगर उसमें रियलाइजेशन ऑफ द ड्यूटी की क्षमता है, he can execute the things very well. वह अपने कंटेंट को भी बढ़िया से बताएगा, वह बच्चों को उपयुक्त जानकारियां भी देगा, उसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी देगा, उसे नॉलेजेबल भी बनाएगा। एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट, एवरी डिजायरेबल aspect will be fulfilled. What are the main objectives of the classroom management? The main objective of the classroom management is to understand concept of classroom management. First, जो काम हमें करने हैं उसका हेतु पहले हमें समझ में आना चाहिए और पूरी तन्मयता से, पूरी प्योरिटी के साथ उसे समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, पहले शिक्षक को ही इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसमें इतनी सारी बातें तो हो गई, लेसन प्लान भी हमने बना दिए, अब हमें अपना शिक्षण कार्य कब से, किस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू करना चाहिए। अलग अलग हिस्सों में आप देखे होंगे, आप सभी एक्सपीरियंस्ड हैं। मैंने पहले ही कहा है, इट इज अ सेशन ऑफ शेयरिंग द व्यूज, नॉट मेकिंग समवन टू known about any new things. Nothing is required there like this. We all are the proficient executor of our own field. It is clear. I am not here to guide you something. I am here only to review the things, so that every missed aspect can be quite at ease and fresh in your memory. And at the time of the contribution, you just can go through. ये बहुत जरूरी है। कभी कभी विस्मृति आ जाती है, कभी कभी मोनोटोनस हो जाते हैं
और बातें जितनी तीव्रता के साथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। There is a question, sir. हाँ, yes. I think more than 95% teachers, they are addicted toward degrees. BA, B.Ed, M.Ed, PhD, they are addicted toward. They are not accustomed to earn, they are addicted to earn. But when they are going to conduct the class, they have no any capability to control, to handle the students. So without degrees, there are so many teachers, they are going to control the class. What is the need of certificates? What is the need of degrees? Because there are so many degrees, there are so many teachers are neglected in missionary schools, in the 5-star schools, but those who don't have any certificates, they are accepted. Yes. What is the need of degrees? So the question raised by our dearest friend is not related to my topic, yet his query, his doubt is real, that I can say. Degree has its own limitations, sir. Degree is necessary, but degree is not everything. आप याद कीजिए उन वाक्यों को जब हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, उस समय जिन्होंने हमें टेबल सिखाया, पहाड़ा सिखाया, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लिविंग वाले नहीं थे, वो ट्रेडिशनल पैटर्न के टीचर थे। लेकिन आज हम लोग उन्हीं के द्वारा पढ़े हुए बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो हमारे ये जमाने की बात है। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्पेन ऑफ टाइम, यह समय की बात है। डिग्री का अपना वैल्यू है, इट हैज इट्स ओन बट इट हैज लिमिटेशन ऑल्सो। और आपने जिस टीचिंग की बात की, कोई जरूरी नहीं है कि एक आइडियल टीचर के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां ही हों, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अगर अपने वार्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो लड़का भी, वो विद्यार्थी भी आपको पहले खोजता है, चाहे उसके नजर में आपकी डिग्रियां नहीं होती। आपके क्लास में बैठने वाले बच्चे को ये नहीं पता कि आप कितने विषय में एमए हैं और आपने बीएड किया है या नहीं किया है ना। तो ये आपका जो ओवरऑल अपीयरेंस है, आपका जो कंडक्ट है क्लास में, आप जो उसके क्वेरीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बच्चों को सिर्फ इतनी बातों से लेना देना है। ठीक है, ओके, शुड आई गो अहेड? ओके, थैंक यू सो मच। नाउ द सेकेंड थिंग, दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। आखिर क्लासरूम मैनेजमेंट हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन क्या हमने इस पर गौर किया है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, लक्ष्य क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट इतना सोफिस्टिकेटेड और सेंसिटिव इशू क्यों बन जाता है जब हम क्लास में जाते हैं? क्यों ऐसा बोला जाता है कि आपका क्लास कैसा है, आपके क्लास की व्यवस्था कैसी है, क्या आपके क्लास में प्रॉपर नॉलेज गिविंग एंड टेकिंग सिनेरियो है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर होना चाहिए तो ये क्यों होना चाहिए? क्या लक्ष्य है इसके? ये 3 लक्ष्य, दीज आर द 3 गोल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट पहले हमको समझ में आए, उसकी अहमियत। दूसरा, बेसिक स्किल, टीचर का जो बेसिक स्किल है उसमें टीचर को मजबूत होना चाहिए, एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज से उसे लैस होना चाहिए। और अगर ये 3 चीजें हो गई, यानी इन आवर टर्मिनोलॉजी, if we transform the same thing in our style, we will say that the purpose should be clear in the view of the teacher before entering the class. The first one is that, what is the purpose of my arrival? This should be clear in the mind and memory of the teacher. The second one is whether I am competent for delivery, whether I have confidence to go through all the things, or am I capable to solve out the raising issues of the pupil? और इसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने पहले सेशन में बातें की थी।
कि टीचर कितना भी नॉलेजेबल हो, उसे स्किल्ड साबित करना नहीं होता, वो साबित हो जाता है। तुलसीदास ने रामायण में कहा है, पंडित सोई सो गाल बजाओ। तो उन्होंने, रामायण इज ए बंच ऑफ थ्योरी, द आइडियलिज्म, इट इज ए स्टोरी ऑफ आवर डेली लाइफ। उसमें उन्होंने सारी बातें कर दी है। टॉक लेस एंड मेक देम फील मोर। कम बोलना और ज्यादा समझने देना और खुद भी समझना। और इसी के लिए हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, इसी के लिए हम लेसन प्लान करते हैं। सो इट हैज, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। नोबडी कैन मेक यू, क्लास समाप्ति के बाद हो सकता है बहुत सी सारी बातें दिमाग से निकल जाए। एक बात तो याद रखनी ही है, we are made for the effective teaching, we are made for the honest delivery, we should be moral at every walk of life। ये मोटी मोटी जो थीम और कंक्लूसिव बातें हैं, इन बातों को तो हम ध्यान में रख ही सकते हैं। इसमें बहुत विद्वता में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एज ए टीचर वी आर इन द पोजिशन टू रियलाइज आवर ड्यूटी बेस्ट। Nobody can make us feel that you are a teacher, you should do that, you should do that. No, such sort of shouting will go in vain. If we are adamant, if we have some cracks in our memory, if we are ourselves doubtful, if we lack the vision and clarity, we cannot deliver honestly. So before going through that detail of the content, we should keep our frustration beside the class. After coming from the class, we again adopt it. But once we enter into the class, we should keep everything aside, because everything remains secondary that time. We are made for our wards. We are the dearest of the wards, and wards are most lovable for us. And it is related with the passion. Love and passion is the greatest substitute of every feeling. If we have the passion, if we have extreme love in our heart, we cannot betray someone else. So this is the best thing. As I told you, all are respected. I'm not putting forth every specific view before you. I'm making known about the things which we sometimes forget. By mistake, we forget. But if we claim ourselves a teacher, we should not forget. We should be habitual of a real delivery. Okay. Now, just marching ahead towards other teaching strategies, techniques for classroom management. These are merely the contents. One by one we will go through. It is very, very worthy, and we can just take assistance from them while we are in the class, where we are going through the class session. Monitor classroom activities well. Give feedback and reinforcement. Feedback and reinforcement. हमने बच्चों से अपने पिछले अध्याय की बातों में जाना, उन्होंने क्या जाना, asking trifles questions, basic questions, and reinforce them. Keep lessons interesting. It should be not monotonous at all. Never threaten, harass your learners. They can sometimes ask foolish questions. They can ask because they are the teeny tots. They are immature personalities. They will raise their doubts, but we should not express our anguish for them. Very lovingly, we can just saturate their raised questions, raised issues. So we should not threaten them. Neither we should try to harass them.
Get rid of any distractions. Not only that, if you are distracted or we have become deviated from the other distraction produced by the others, such as honorable respected teachers told in the first session, अगर अलग अलग तरह की आवाजें आने लगी क्लास में, वो आएंगी, वो नेचुरल है, डिस्ट्रैक्शन आएगा, but we should try to accommodate them. बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है अंग्रेजी में, accommodation, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है. We are, diversity is natural. It is not man-made. Diversity is but natural. It exists everywhere. But so what? अगर हमसे कोई डिफर कर रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हम उससे झगड़ा कर लें, उसी में तो ब्यूटी है. सबको एक साथ समायोजित करना, हिंदी में बोलते हैं समायोजन. ये समायोजन बड़ा प्यारा शब्द है, और अगर इसमें हमें महारत हासिल हो गई तो हो गया. बस इस एक वर्ड को याद रखें, एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज. अगर आ गया हमको एकोमोडेशन ऑफ डिवीजन, अगर ये आ गया तो वी विल कम आउट एज अ विनर. सो क्लास एंड being an architect of the class, it is your duty to make the adverse positive, to throw out the odds. Odds will be there, but it is you who is well capable to throw them away. So get rid of any distractions, give them opportunities, fair equal opportunities. That is why NEP सारे पॉइंट्स बड़े दमदार हैं. Give them opportunities, fair opportunities, equal opportunities. पहले के एजुकेशन पॉलिसीज ने ऐसा नहीं था कि हमारे भारतीयों के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार सिर्फ ये नई एजुकेशन पॉलिसी ही कर रही है, करेगी, ऐसा नहीं है, या इसमें से यही सबसे बड़ा प्रामाणिक चीज होने जा रही है, ऐसा भी नहीं है. बहुत सारी कमेटियां आई, 1986 की पॉलिसी भी आई, सबने बहुत कारगर काम किए. लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी का नाम हम क्यों ज्यादा ले रहे हैं, इतना इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है? इसमें हिडन सभी चीजों को, वो चीजें जो नेग्लिजिबल थी, जिसको लोगों ने समझा कि ये कारगर नहीं होता है, चलो छोड़ ही देंगे तो क्या होगा, उसको इसने पकड़ा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर जोर दिया गया, इक्वलिटी एट एवरी लेवल, इक्वलिटी फॉर ऑल एंड एवरी लेवल. इसीलिए जस्ट ए मिनट खाली मैं कर लूं, इसलिए इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा. 3 बच्चे हैं, एक सामान्य बच्चा है, एक बच्चा है जिसके एक पैर नहीं है, और एक बच्चा है जो 2 दिन से खाना नहीं खाया. ये 3 बच्चे हमारे सामने हैं. अब हम उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, काम नहीं चलेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, या कोई मीन्स आया, कोई छात्रवृत्ति आई, कोई कुछ आया, उसको हम बराबर बराबर बोलने के लिए तो हम बोल दिए, हम बराबर बराबर कर दिए सब में. क्या ये जस्टिस हुआ? नहीं हुआ जस्टिस. क्यों? क्योंकि तीनों 3 कैटेगरी के हैं, तीनों की समस्याएं अलग अलग हैं, इसलिए तीनों के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूशन करना हो. एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू हैव फेयर जजमेंट. एक जज का काम बहुत आसान नहीं होता. इसलिए इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्वलिटी फॉर ऑल बट inclusion of all at the same time, including them into the mainstream of the society, dragging them away into the mainstream of living. छोटी छोटी बातों पर ड्रॉप आउट्स हुए तो क्यों हुए, कारण क्या था, विस्थापन क्यों होता है,
विस्थापन का संबंध सामाजिक परिप्रेक्ष्य से है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से। इन सभी के प्रॉब्लम्स को समझना, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर समझने की कोशिश करना, कम्युनिटी वाइज समझने की कोशिश करना, ग्रुप वाइज समझने की कोशिश करना, रिलीजन वाइज समझने की कोशिश करना, ये छोटा मोटा टास्क नहीं था, लेकिन ये टास्क अकम्प्लिश किया जा रहा है, ये टास्क किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसलिए आशाएं भी बंधी हैं। Let them estimate the final outcome. It will take just time. Use of different types of aids and appliances according to your learner's need. So very easy, nothing very great to understand. Beware of environmental triggers. Environmental triggers जो हैं उसको भी समझना जरूरी है। Environmental triggers आया अभी। Mobile is proving itself a very great obstacle in the overall learning. बच्चे बैठ गए, कमरे में बैठे हुए हैं, मोबाइल क्यों देख रहे हो जी, क्यों इतने देर से? प्रोजेक्ट मिला हुआ है, you will be spellbound. And he is doing his own, he is just dreaming away. वो खोया हुआ है। तो गुड चीजों का भी बहुत बैड इफेक्ट हो सकता है, यह न्यू टेक्नोलॉजी ने जाहिर कर दिया। तो कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, और उन ऑब्स्टेकल्स को समझना ये भी हमारा ही काम है, उसको टेक्निकली हैंडल आउट करना ये भी हमारा ही काम है। एंड वी आर डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली, सम ऑफ देम आर डूइंग। नाउ अगेन, what exactly a teacher's role is? First behavior, then learning. बच्चों को हमें बताना होगा, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहेवियर ठीक नहीं है, कंडक्ट ठीक नहीं है, कैरेक्टर ठीक नहीं है, लर्निंग भी नहीं होगा। 90% नंबर लाने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ने में ही प्रायः अच्छे नहीं होते, कंडक्ट में ही अच्छे होते हैं। इसीलिए टीचर्स भी पहले उसको पूछते हैं। अब ये दोनों कोएफिशिएंट है, तो उसे ये बताना होगा कि बिहेवियर का तुम्हारे लर्निंग से सीधा सीधा संबंध है। अब टीचर्स हैं, एक टीचर है जो कोऑपरेटिव है, फिगर के माध्यम से है, इज आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस, फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट रेमेडी। एक टीचर है जिन्होंने बच्चों का सामना हुआ, बच्चों को देखा कुछ इधर उधर करते हुए, माथा पीट लिया, अरे बाप अब हम कैसे क्या करें, ये तो एकदम बिगड़ा हुआ है। इसने रिब्यूकिंग कर दिया क्लास में, बहुत भद्दी बातें मुंह से निकाल ली। अब तो हम गए काम से, भगवान मेरा आंख बंद कर दे, मेरा नाक बंद कर दे, भगवान भगवान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या। इट इज नॉट योर स्टाइल, you should try to combat with the problems. It is you who can find out the exact way. You have the remedy, just believe. It is you who will try to bring up from that top of mud. आप उसको उस कीचड़ से ऊपर लाने में मदद कर सकते हैं। आपको राम राम करने की जरूरत नहीं है। राम राम वो करेगा जो मेयर स्पेक्टेटर है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उसी को साथ लेकर के चलना है। आप भविष्य निर्माता हैं। आप किसके पास जाएंगे? आपके पास सब आता है, आप किसके पास जाएंगे? The figure is enough to say about all the things. Just go to viable goals. Goals should be quite viable. ऐसा कुछ सपना उसे नहीं दिखा दें जिससे कि उसका कोई ताना बाना नहीं। अगर वो 4 घंटा क्रिकेट खेलता, अगर पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, उसके गोल भी उसी अनुसार निर्धारित करने चाहिए। ठीक है, मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में वो है, उसको कहेंगे अच्छा पेंटर बनोगे, पहले मैट्रिक पास करोगे तब तो ठीक है, तो मैट्रिक पास करने के लिए एफर्ट लो, लेकिन अच्छे पेंटिंग का भी क्लास करो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के क्लासेस सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन होते हैं। क्रिकेट कोचिंग रोज नहीं होता, तुम 4 घंटा रोज क्रिकेट खेलो। तो गोल शुड बी वायबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वर्ल्ड।
viable, व्यवहार्य, that can be achieved. ऐसा नहीं कि वो एकदम बच्चा है, अब उसका इंटरेस्ट कुछ दूसरे जगह है, अब दिन रात उससे बोले जा रहे हैं तुमको इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनने हैं। गोल्स हमेशा वायबल होने चाहिए, जिससे कि तीर एकदम टारगेट में लगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है? बच्चे के लाइफ को सक्सेसफुल बनाना। बच्चा पढ़ लिख करके कोई बहुत बड़ा पीर बाबा नहीं बनेगा, उसे बहुत बड़ा संत नहीं बनना है, उसे इसी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है। तो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के लिए उसे मैटेरियलिज्म सिखाने होंगे। The behavior of the students within the classroom are a direct product of the teacher's temperament. वह टीचर्स एनवायरमेंट, जैसा टीचर करेंगे, जिस तरह का क्लास एनवायरमेंट होगा, बच्चे की एक्टिविटीज उसी अनुरूप ढलेगी। उसके हर एक एक्टिविटीज पर उसके इम्प्रिंट नजर आएंगे। We just raise questions that why people in a galaxy mode go to the missionaries. Why? What is the reason? They don't contribute sometimes of the par excellence. No, it is not true, but they make the word known about, they make them conscious about their conduct inside the classroom, outside the classroom, within the campus. बच्चों को पहले अच्छे कंडक्ट की शिक्षा दें, और इसीलिए हम देखते हैं उन स्कूलों के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, अंग्रेजी बोलने लगते हैं। अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी स्पेशलिटी नहीं हो सकती है आपके नजर में, लेकिन अगर हिंदी के साथ साथ अच्छी अंग्रेजी भी सीख जाए तो क्या गड़बड़ है? वो तो एक स्पेशलिटी हो गई। अगर हमको 2 भाषाओं के अलावा 3 भाषा आ जाए तो क्या गड़बड़ी है? और वो अपने among their friends they begin to talk, yet they are not very good at this study. Subject wise they are not very good, but their behavior seems to come out of the sign. वो जो बिहेवियर करते हैं अपने उसमें खुलापन है, वो डाउटलेस होकर के बात करते हैं, जबकि रूरल एरियाज के माइक्रो इंटीरियर्स के स्कूलों में इस तरह का एनवायरनमेंट हम नहीं देखते हैं। और इसका सीधा संबंध क्लासरूम मैनेजमेंट, आउटसाइड क्लासरूम मैनेजमेंट, कैंपस मैनेजमेंट, इन सभी से डायरेक्ट है। और ये बात अगर हमारे दिमाग में रहेगी तो हम इन बातों को बढ़िया से देख भी पाएंगे। Sir, there is a question, sir. Yes. Sir, when a student is achieving the target, and the parents are insisting them to achieve the target, and there are so many students, they are not going to achieve the target, and they may suffer from depression, and they lose the happiness, the real life that we live, that our purpose is to live blissfully with great happiness, but we just forget, and they may suffer from mental depression, they may commit suicide in Rajasthan, in Kota, in Patna, because they are not achieving the target, but their guardians compelled them to achieve the target, but if they are not achieving the target, they may suffer from depression, they may commit suicide. I think goal is everything. No, listen to me. Goal must be there. Without goal, we become vagabond. Goal just provoke us to achieve, for achievement. But it does not mean that if once we become the failure, there is all the ways, all the dreams of ourselves have been shattered. No. एक सपने के बिखरने से दूसरे सपने बंद नहीं हो जाते। तो यही बात तो यहाँ है। हमें क्लासरूम मैनेजमेंट और एक गाइड होने के नाते बच्चों को यही तो बताना है।
कि आपके अगर एक सपने बिखर गए तो आपके लिए और कई सपने पूरे होने बाकी हैं। यही इसी पर तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। उन्हें हमें समझाना होगा कि सपनों को पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश अल्टीमेटली सफल ही हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन सपने उनके लिए और भी हैं, विकल्प कभी खत्म नहीं होते, सब्स्टिट्यूट्स आर ऑलवेज देयर। यही तो बीइंग ए टीचर हमें बच्चों को बताना है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो दिस इज द थिंग, लिसन टू मी नाउ। तो being a guide, being an instructor, being an ultimate pathfinder, it is our duty to make them known, not to be harassed, not to be disappointed at the same time. Okay? So, sir, your question is appropriate, but make the pupil known whenever you enter the class that our ultimate goal is not to get success. Our ultimate goal is to be a good human being first. Okay, if we become able to turn out the individual into a good human being, aspirations will be fulfilled, either totally or partially, but he will not remain unsuccessful in his life. वह व्यक्ति लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल रह ही नहीं सकता। यस सर। The behaviors of the students within the classroom are a direct product of the teacher's assignment. Yes, I agree with this statement. Yes. But I'm also thinking the behavior of the students also gives the performance of the teacher. Yes. So when a teacher is communicating or interacting among the students, so in that time, when those students are positive or serious or looking very different, so that is something feedback for that teacher. He is doing well in that classroom. So that's why the behavior of the students is also related to the teacher's performance. That is why I told you, na sir, you are repeating the same thing. I told you that proper praise, if your words are praiseworthy, if you just very liberally give the compliments of his right doing, हाँ बेटा ठीक है, आगे बढ़ो, हाँ ये गलती हो गई तो क्या हुआ, if such type of compliments are pouring on, if some sort of respect you are bestowing on his shoulder, he will just come out of blue, उसमें प्रेरणा जगेगी। और yes, और जब प्रेरणा जगेगी तो आप देखेंगे कुछ महीने कुछ साल के बाद वही लड़का वही बच्चा जिसको आप हेट करते थे वो अचानक से बहुत अच्छा बन गया। Yes, they will begin participate in every seminar and all that musical concert and all that. You will be yourself amazed to see. इसलिए टीचर का पहला काम है कॉम्प्लीमेंट देना। Okay, should I go ahead? Now the second one is be an authority. Stand up straight. Our posture counts much in the class. हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्लीनलीनेस हमारा कैसा है, ये बहुत जरूरी है। बी डायरेक्ट। अगर किसी ने गलती किया, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, प्यार से ही सही, लेकिन हम कम्युनिटी वाइज उसको संबोधित नहीं करेंगे। गलती करने वाले को इंडिविजुअली बोलेंगे, कभी ग्रुप पनिशमेंट जल्दी नहीं देंगे, पनिशमेंट तो पहले देंगे ही नहीं, सिंगल आउट करेंगे, उसे प्यार से समझाएंगे। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू बी डायरेक्ट, डोंट गेट रैटल्ड। रैटल्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना। रैटल इज अ वर्ड व्हिच मींस बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। अब छोड़ो, हमसे नहीं होता है। दिस इज नॉट एन एटीट्यूड ऑफ ए ट्रू टीचर। टीचर का ये कर्तव्य नहीं है। Don't get yourself rattled, don't get yourself frustrated because
यू आर द पाथ फाइंडर, यू आर द फॉर्चून मेकर। अगर आप ही परेशान हो जाएंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। योर कॉन्फिडेंस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द क्लास एट एवरी वॉक। क्लास में जब आप हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज से झलकने चाहिए, दिखने चाहिए। वेल ड्रेस्ड अप, ये बहुत जरूरी है। और when teachers present themselves in an authoritarian mode, it helps them gain the respect and trust. So पूरा authority के साथ, पूरे स्वामित्व के साथ, पूरे ग्रिप के साथ क्लास को फेस करना, और ये नहीं महसूस होने देना कि मैं कॉन्फ्यूज्ड हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। कभी कभी घर की परेशानियां लेकर के हम स्कूल चले आते हैं, इनसे बचें। और अगर इससे हम बचते जाएंगे तो फिर हमारा जो डिलीवरी है, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर कट विजन और गोल, ये बहुत जरूरी है। शेयर्ड विजन हो, ऐसा विजन जो हमारा, हम ही धो करके उसको नहीं चले। जब तक उसको शेयर नहीं करेंगे, हर चीज शेयर करना चाहिए। एग्जाम्पल्स पुट करके चीजों को समझाएं, हाँ क्लैरिफाई करें। माइंड सेट ऐसा हो जो हमेशा ग्रोइंग मोड में हो। ये कैसे होगा? जब हम आउटसाइड इंस्टेंसेस लाते जाएंगे। मैंने फर्स्ट सेशन में बताया कि अगर हम पढ़ा रहे हैं लिटरेचर का कोई सब्जेक्ट, अगर कहीं वो आवे तो थोड़ा एक छोटा सा गीत की पंक्ति दोहरा दिए, राष्ट्रवाद का कोई एग्जाम्पल दे दिए, विवेकानंद की कुछ पंक्तियां बता दिए। कुछ ऐसी चीजें जो एक रास्ता को भी खत्म करेगा और जो हमारे लर्निंग प्रोसेस को बेटर भी करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है कि बच्चे क्लास से अधिक फायदा उठाएं। इसलिए आप नर्सरी केजी बहुत सारे स्कूल में जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर डांस करके, टीचर भी डांस करके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो भी हाथ हिला रही हैं, बच्चों के साथ नाच रही हैं। इट इज नॉट ए मिमिक्री, इट इज ए टाइप ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड टीचिंग। ये अच्छा टीचिंग प्रोसेस है, क्योंकि इससे what does it mean? Marketing. Marketing, it is not any word that can be correlated with the fact. Marketing means it. Yes, explain. Actually, teachers are also called the promoter of the knowledge. Yes. So it is the task of the teachers to promote the ideas, the vision, the knowledge. So that is definitely the definition. Yes, you are right. Listen to me. The ideas or the trick or something new technique which you have adopted already, yes, it will just go to be expanded outside. Yes, it is the function of the marketing. Means what? Marketing means, yes, the vision you have adopted, now you are well in the condition to expand them outside. Okay, so this is the thing. Okay, rituals, themes, birthday celebration in the school, student of declaration of the student of the month. If somebody has done well in the class, great clapping, community wise clapping, just making them known about his achievement, कुछ पुरस्कार दे देना, कुछ ये करना, फील्ड ट्रिप पर ले जाना, बात बात पर हैंडशेक करना, कुछ ऐसी चीजें। जब कभी एक्वेरियम लेते आए क्लास में, ग्लोब लेते आए क्लास में, कभी अनाज के दाने स्टिच करके क्लास में लेते आए कि ये फला है, ये है। कभी लीव्स को फेविकॉल में एक बड़े बोर्ड में बना करके लेते आए, ये देखो आम का पत्ता है, ये देखो पीपल का पत्ता है। If it is required as per the time of the requirement, just you can do it. So the next one is to be more effective, a teacher needs to be skillful. इसको हाईलाइट किया गया, जिसको हम लोगों ने टीचिंग टेक्निक्स में, रिसोर्सेज में ऑलरेडी देख लीजिए। बेसिक टीचिंग स्किल्स में टेक्निकल स्किल, कंप्यूटर वाले जो टेक्निकल क्वालिफाइड हैं वो टेक्निकल स्किल दिखाएंगे। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, कॉन्सेप्ट वाइज उसको ज्यादा से ज्यादा फीडअप करना। ह्यूमन स्किल, उसे यह बताना कि समाज में अच्छा मानव के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। सबसे पहले एक अच्छा मानव कैसे बनना है, हाउ यू कैन जस्ट ट्रीट एज ए गुड नेबर, अपने नेबर के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, स्ट्रेंजर के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, अगर आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में सफर कर रहे हो तो कैसा करना चाहिए। ये सारे जब कंडक्ट हम उसे पब्लिक लाइफ के सिखाएंगे तो ये अलग अलग ह्यूमन स्किल होंगे।
कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत कैसे करनी चाहिए, अपने इनर आइडियाज को एक्सप्रेस कैसे करने चाहिए, और स्किल्स को विस्तार से बताया गया है। आई थिंक दैट इसको बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब इसके इंपॉर्टेंस हैं, अगर कंक्लूजन वाइज करें तो अभी तक के कक्षा में क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या कंक्लूसिव पॉइंट्स आ सकते हैं। पहला, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, दिस इज द अल्टीमेट एम। Each and every fellow sitting in the class must feel that the class is for myself. The teacher is for myself. शिक्षक भी क्लास के मेरे लिए यहाँ है और ये क्लास भी मेरा अपना हो। क्लास से दूर दूर भागने का जो उसके अंदर प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए, और ये तब होगा जब हम इन सारी चीजों को ला करके क्लास एनवायरनमेंट को उसके लायक कंड्यूसिव बनाएंगे, फैमिलियर बनाएंगे। अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी करके कि 2 क्लास ले लिए और उसके बाद हम इतने थक गए कि तीसरे क्लास के लिए कुछ बचा ही नहीं, ये भी देखना काम है। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज ए ग्रेट टेक्निक, और उसको सेव करते हुए हमारा कंट्रीब्यूशन हो, बिकॉज यू आर ए मॉरल एजुकेटर, ए टीचर इज अ मॉरल एजुकेटर. That's why you should try to boost up their inner strength at the same time. Just a minute, sir. Let me conclude because I have got a very little time now. Okay. Inform students what is expected of them. टीचर को ये भी मालूम हो कि आप तो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, आपने तो हमको बता, मुझे भी आपसे कुछ आकांक्षाएं हैं. Let them make known about them. Let them make aware कि शिक्षक को भी हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जब ये वो जान जाएगा, हम देखते हैं अक्सर, कभी कभी आप देखते होंगे किसी फर्स्ट रैंकर्स को किसी एग्जामिनेशन में कम नंबर आ गए, 2-3 लड़कों से कम आ गया, आपने उसके पास क्या आपको इस बार बहुत कम नंबर आ गए? नहीं सर, अगली बार अच्छा करेंगे। और आपके मोटिवेशन से ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो तो अच्छा था ही, किसी कारण बस वो नीचे आ गया और आपके मोटिवेशन ने उसको फिर से ज्ञान करा दिया, और पता चला बोर्ड एग्जामिनेशन में गया तो टॉपर था, टॉपर है, टॉपर बन के निकला। ऐसी स्थिति कभी कभी हम देखते हैं, और ये इसको माइन्यूटली रीड आउट करना भी हमारा काम है। Informs students what is expected of them, increases class time and decreases any disruptions. Disruptions को जैसे जैसे अवॉइड करेंगे, क्लास टाइम बढ़ता चला जाएगा। Effective school administration, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर तो हम लोगों का वश है नहीं, इसलिए इस पर हम लोग लीस्ट बात करें तो अच्छा है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी इन द मैनेजमेंट, लेट देम डिसाइड in what fashion, in what way they can just try to drag their administration. So I think that it was a very common topic. In everyday's affair, we just combat with this sort of problem. Ultimately, we overcome, and let us sing together. Okay? ये 4 पंक्ति हम लोग मेरे साथ आप गाएंगे, मैं यहां से बोलूंगा और आप भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Thank you so much. Once again, many thanks to Mr. Shailendra Kumar. Today's all session has been performed very well. We will gather again tomorrow for next 4 sessions. So thank you and have a nice day.